नमस्कार, मैं आपकी होस्ट स्नेह सनी फ्रॉम सनी साइड अप से आज लेके आई हूँ एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन को, डॉक्टर कयूर बुच। ये है तो लंदन से, लेकिन रहते भारत में, इनका दिल भी भारत में, इनकी कर्म भूमि भी आजकल भारत हो गई है, तो ये वहाँ पे है। एंड ही हैज़ अ हॉस्पिटल इन अहमदाबाद, and he is also in a faculty in a medical school in Australia. So he's well versed, and apart from being a doctor, ये बहुत से दूसरे सनातन के काम भी करते हैं। वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे सनातन के बारे में, बट आज हम इनकी इनकी मेडिकल नॉलेज पिक करेंगे ताकि हमको फायदा हो सके। तो वेलकम कयूर। मैं कयूर नमस्कार, बोलने वाली जय हूँ। माता जी फॉर नवरात्रि टू एवरीबॉडी। जय माता दी, जय माता दी। तो कयूर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। तो like Sneh said very correctly, I'm an orthopedic surgeon. I was practicing in the UK and USA together about 25 plus years. And तो ऑर्थोपेडिक में एज यू नो, आप सबको पता होगा कि हाथ पैरों का जो दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, उसकी हम निदान, डायग्नोसिस और सारवार करते हैं। हड्डियों का टूटना, फ्रैक्चर, and the more experience you get, the more complicated cases you deal with. आजकल मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो कैसे मैं लोगों को बिन जरूरी सर्जरी से बचा पाऊं। जी जैसे कि नी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो काफी कॉमन हो गया है कि जैसे कार का टायर बदलते हैं उस तरीके से लोग नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, या तो उनको बोला जाता है कि करवा लीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ एक नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है मगर दोनों हो जाते हैं। So, what are the options, you know, when you have knee pain or when you are relatively younger, and when I say younger, below 55, और राइट। स्नेह तो हमेशा के लिए यंग है, तो उसको तो खास लागू पड़ेगा ये। तो मैं तो 90 पे भी यंग ही जाने वाली एग्जैक्टली एग्जैक्टली फॉर एवर 21, इन्हीं को देख के बनाया है टाइटल। तो कहने की बात यह है कि when you are younger and you have knee pain, when you are below 50, below 45, तब आप क्या कर सकते हो ताकि जाके आपको नी रिप्लेसमेंट या तो बहुत बाद में करवाने की जरूरत पड़े या तो टोटली अवॉइड कर सके। उसके लिए काफी मेजर्स होते हैं, लिंक टू योर लाइफस्टाइल एंड लिंक टू सर्टेन मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, वो सब पे हम काफी ध्यान देते हैं आजकल। So a lot of knee pain patients that I see, whether I see them via video consultation from London or US or Dubai or Kenya, और जी। कहीं भारत में दिल्ली या तो चेन्नई या समटाइम्स पीपल इन अहमदाबाद वेयर आई एम बेस्ड नाउडेज, दे आल्सो कि डॉक्टर साहब वीडियो पर मिल ले क्या, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो जो सिंसियरली वीडियो का टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं उनके लिए इट्स अ बिग बून एक्चुअली। सो आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू स्नेह फॉर गेटिंग दिस प्रोग्राम ऑन द वीडियो। मेरे को तो कई शुरू करते हैं इससे कि लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट नो व्हाट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन व्हाट्स मीन बाय ऑर्थोपेडिक एंड व्हाट्स एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्चुअली वुड डू। सो वहां से या शुरू करते हैं कि ऑर्थोपेडिक फ्रॉम होता बेसिक्स, क्या है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन इज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सर्जन who deals with bones, joints, muscles and ligaments. यानी कि आपको बैक पेन हो, नी पेन हो, शोल्डर पेन हो, हाथ में कार्पल टनल का प्रॉब्लम हो, पैर में बनियंस का प्रॉब्लम हो, स्पोर्ट्स इंजरीज लाइक नी लिगामेंट इंजरीज हो, शोल्डर का डिस्लोकेशन हो, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग कबड्डी। इन इंडिया वी ट्रीट अ लॉट ऑफ कबड्डी प्लेयर्स। जी या तो स्पोर्ट इंजरी जैसी इंजरी जिम में जो होती है, वो सब जो आता है, फ्रैक्चर्स हो, ये सब जो समस्याएं हैं, यानी कि जोड़ों की, मसल्स की, स्नायु की, नसों की और हड्डियों की, वो सब ऑर्थोपेडिक सर्जन डील करते हैं। बट सर्जन डज नॉट ऑलवेज मीन सर्जरी और ऑपरेशन। दैट इज द मैसेज आई रियली वांट टू गिव टू यू। राइट। क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट पीपल टू नो कि कहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम पीपल डोंट नो विच डॉक्टर टू गो फॉर, क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं होती है कि किसके पास जाए। दे विल जस्ट गो टू देयर जनरल प्रैक्टिशनर, एंड इफ द जनरल प्रैक्टिशनर इज स्विच्ड ऑन, ही और शी विल पिक अप एंड से ओके आप वहाँ रेफर हो जाइए। एंड समटाइम्स अपने जो लोग हैं
शुरू की जो पेन स्टार्ट होती है उसको इग्नोर भी करते हैं. दे विल नॉट गो टू फिजियो, दे विल नॉट गेट इट sorted, they will not get an x-ray done, and the pain increases. And I'm one of them actually who's done that before. मैं आपसे बाद में कंसल्टेशन लेने वाली हूँ कि my Definitely. left what you call that एड़ी के वहाँ पे, heel pain, yes, बहुत not common है. heel, it's not the heel, it's the side bone, उसके पीछे. the bone. I think it's a Yeah, ligament. yeah, yeah. Arch, yes. Yeah. So people ignore, but if people know कि कौन सा डॉक्टर क्या करता है, and on this channel I have made sort of myself के मैंने लोगों को knowledge देनी है, so that people start looking at their health and early, right? Yes. When the problem just hits, or even the problem like for heart, even if it doesn't hit, what you should start doing early. So those people, I want to make sure that normal general public, especially in India, are very aware of. UK में people are mostly aware, overseas में, but I find कि India में बेचारे कई aware नहीं होते हैं, उनको knowledge बिल्कुल भी medical knowledge नहीं होती है. तो how do you get referred? Is it the doctors refers you, or they self refer themselves? How does it happen? तो भारत में क्या है कि पर्सनल रेफरल सिस्टम जो जिसको हम फैमिली एंड फ्रेंड सिस्टम बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, दैट वर्क्स क्वाइट अ लॉट. एक्चुअली अगर यूके में भी देखें तो डेविड कैमरून जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था. ही वाज एन इंडोफाइल and he had started in the NHS system called Friends and Family, that to evaluate the hospital's quality service, and he had introduced a Friends and Family test. तो भारत में वो टेस्ट ऑटोमेटिकली है, थोड़ा ऑर्डर रिवर्स में है. फैमिली पहले आता है, फ्रेंड्स बाद में आते हैं. तो यूके में फ्रेंड्स पहले आता है, फैमिली बाद में आता है. Of So it was course. quite interesting मेरे लिए how तो the word friends हमेशा पहले आते हैं. how the words reflect the society is so fascinating to me. तो भारत में आज भी family comes first and then friends आते हैं. Of course, friends are important. We love them, and which is why we are talking today. Of course, of course. Yes, yes. So awareness is very important. There is another factor which I found out whilst practicing in Bharat now. There is a lack of trust in doctors and hospitals, and people are actually afraid of visiting doctors. Definitely. Secondly, patients and their families are afraid of visiting a big 5-star looking hospital, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी बढ़िया हॉस्पिटल दिख रही है तो बहुत महंगी होगी और हमारा तो पूरी हमारी कलाई हो जाएगी. हाँ. तो ये जो फियर फैक्टर है, देन आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम. आज ही एक पेशेंट ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन जो फी हॉस्पिटल ने ली वो काफी भारी थी. तो मैंने समझाया कि लोग, वी डोंट डील इन कैश, एवरीथिंग वी अर्न इज टैक्सेबल, और भारत देश को टैक्सेशन की बहुत जरूरत है, so that it will be initially cheaper for you to pay in cash, but then as a country we will be the losers. Then I gave them the breakdown ki, what is the hospital's share of my fees, what is my income tax. तो उनको पता चला कि मेरी जो 2,600 रुपया की कंसल्टेशन फी है, उसमें से मेरे हाथ में एक्चुअली सिर्फ 11 या 1,200 रुपीज ही आते हैं. जी. Then they understood कि then I gave them a full idea कि वो laboratory test वगैरह होते हैं, वहाँ कैसे commission business चलता है, जिसमें I'm not involved. So that saves you money when you come to somebody like me. So all this awareness about the inside of the medical system, वो नहीं होने से लोगों को डर बहुत रहता है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का भारत में. बट अपना जो टॉपिक आज का है, because every other person through their lifetime will either get knee pain or arm or shoulder pain, neck pain or back pain at least once, in a way कि वो याद रखेंगे, या तो फ्रैक्चर. सो ऑर्थोपेडिक सर्जन की आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ने ही वाली है. एंड उसमें भी अगर आप ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए कि जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है उसका भी नॉलेज रखते हैं, and he is actually happy to provide you with preventive advice and treatment. जी जी. तो समझ लीजिए कि नी पेन लेके कोई आता है कि अभी शुरू ही हुआ है, तो आई टेल देम कि look, these are the things you need to do, maybe these are the tests you need to do, and then based on their actual problem we give them a plan, Right. which
And I have had patients who have flown in from London, actually, in Ahmedabad. Yeah. And some of them are known to, between you and me together. So obviously, I won't name them. So, You are Kayur. You are known so much. I was traveling to Kashmir जब मैं आई थी जुलाई में, and I was in Kashmir and there was a group बस गुजरातीज की थी, तो I just happened to say कि किधर से आए हो, से अहमदाबाद से। ऐसे वो मेरा दोस्त अहमदाबाद में है डॉक्टर कयूर, ओह या वी नो डॉक्टर कयूर का हॉस्पिटल हमें मालूम है, तो यू आर वेल नोन एवरीवेयर यार। नहीं नहीं, तो वो तो ऐसा है कि आप जैसे के दोस्तों की बदौलत। सो कमिंग बैक टू दिस सीरियस प्रॉब्लम ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, और आजकल क्या होता है कि पीपल लिव लॉन्गर। हाँ, that is one thing. The second thing is that the children fly the nest at a very early age. जैसे पहले बिटिया ससुराल जाया करती थी, मगर एक बहू घर में आ जाती थी। अब बहू आज भी, तो बेटा भी ससुराल चला जाता है। बेटा भी चला जाता है। यूनिवर्सिटी एक ससुराल ही है, और यूनिवर्सिटी में गया तो फिर समझ लीजिए कि वो टेम्पररी आपको साल में 1-2 साल मिल लेते हैं, बस वही लाइफ हो जाती है। सो इवन पीपल इन देयर 50s हैव बिकम लोनली, एंड दैट इज व्हेन यू नो, व्हेन यू हैव पेनफुल प्रॉब्लम, इट हिट्स यू हार्ड, क्योंकि आपको फिजिकल हेल्प करने वाला घर में हार्डली कोई होता है। And everybody cannot afford to have a home help, staff or whatever, or even if you have, how much to rely on them. So इसीलिए आपकी जो see, in orthopedics there is a saying that movement is life and life is movement. तो और उपनिषद में बोला गया है चरई वेती, रिमेन एक्टिव, रिमेन मोबाइल, और चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत। तो ये सब जो बातें हैं, तो आपके नीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल देयर इज सो मच एविडेंस टू शो दैट इफ यू लीव योर आर्थराइटिस अनट्रीटेड, नी आर्थराइटिस, then you are at a higher risk of getting heart problems and kidney problems, and you are at a higher risk of dying early, and you are at a higher risk of developing depression. So it affects the quality of life. तो इसीलिए जरूरत है तो नी रिप्लेसमेंट करवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर आर सो मेनी इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स फॉर द नीज which can actually delay the need for knee replacement in some patients, not in all patients. और लोगों को knee replacement में डर रहता है। So the key thing for knee replacement is that when I see a patient, I first of all make sure they need it. Actually, it is in their best interest or not. Then usually I explain to them कि देखिए आपको पूरा बेहोश नहीं होना पड़ेगा. You will be awake during the surgery. That relaxes them a lot. So it's the truth. Local anesthetic, basically. हाँ, उस टाइप का. And then क्योंकि कितने दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा. So I said no. If you have knee replacement in the morning, in the evening you will walk to the toilet, although with a support. तो आप घर पे जाके भी ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट करना है. So all these facts have to be explained to the patients. कि you won't be dependent on anybody's to the. Of course, we generally advise कि आपके साथ 3-4 हफ्ते के लिए कोई ना कोई घर पे होना चाहिए after the surgery. That is always a good thing and a recommended thing. But you are not dependent on them for your basics. तो ये जो frozen shoulder, does it also come in this? Yes. So there are 7 or 8 different causes of pain in the shoulder, and frozen shoulder is one of them. उसकी 2 categories है very quickly. Those who don't have diabetes, उनका frozen shoulder, adhesive capsulitis is the actual scientific name, adhesive capsulitis. वो फिजियोथेरेपी और दवाई वगैरह से इंजेक्शन से अच्छा होने के चांसेस बहुत बढ़िया है. But if you have हाइड्रोथेरेपी से भी, वो जो हाइड्रोथेरेपी, हाँ, वो भी इंजेक्शन के साथ हाइड्रोथेरेपी होता है. और जिनको डायबिटीज है, उनको अगर ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस फ्रोजन शोल्डर होता है, तो these treatments including hydrodilatation works less effectively or less predictably. तो उनके लिए दूरबीन डाल के हम अंदर से सब मांसपेशियां जकड़ गई होती है वो रिलीज कर देते हैं. तो all these treatments क्या है कि आजकल NHS में पहले जैसा नहीं रहा. Like you had a quick access, easy access, you had a continuity of care. All these things are gone. So इसीलिए, and private में it is so expensive. To see a consultant is 300-350 pounds. The consultant like me, I was a consultant in NHS for 16 continuous years and in the private BMI and other groups.
तो मुझे देखने की फी 350 पाउंड जैसी होती है। तो आप भारत अगर आते हैं, जिसको मेडिकल टूरिज्म बोला जाता है, तो आपको एयरपोर्ट ऑनवर्ड्स यू आर टेकन केयर ऑफ। एंड जो नी रिप्लेसमेंट समझ लीजिए कि आपका 12-15 हजार पाउंड में यूके में होना था प्राइवेट में, वो आपका यहाँ 4-5 हजार पाउंड में हो सकता है, वही नी रिप्लेसमेंट कंपोनेंट के साथ। Wow. Wow. So plus you get the other perks of being in Bharat at the same time. The So hospitality of Bharat. yes. So वो medical tourism is a big part of. And you don't have to be an Indian or a Sanatani or a Hindu to come to India or Bharat. You can be from a white English or British background or any background, जी and you can be here. And we get patients from all over. Africa से काफी लोग आते हैं जी जो जी अफ्रीकन ओरिजिनल बैकग्राउंड के हैं, जिनका भारत से कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। एंड दे हैव बिकम आवर फ्रेंड्स। सो कयूर, मैं ये एक चीज पूछना चाहती हूँ जो मुझे हमेशा बॉदर करती है तुमसे मिलने के बाद, कि यू आर अ वेरी वेल नोन डॉक्टर इन लंदन हियर, है ना? व्हाट मेड यू पैक अप एंड गो टू भारत? वो क्या था जो सो तुम वहां ले गया? ये सवाल मुझे काफी सालों से पूछा जा रहा है, और मैं मेरा जो मैं आंसर है, पता करना चाहती हूँ दिल से कि कोई मेरे इश्क लिए था कि ऐसा वैसे था। ही था। नहीं, स्नेह, एक बात मुझे पता है कि स्नेह जो भी बोलती है दिल से बोलती है, हाँ, जी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑफ तो कोर्स। मेरे लिए सवाल वो था कि what is the compelling reason for me to continue to stay in the UK? ओके, So when you have achieved everything professionally, materially, socially, then राइट, you feel कि यहाँ ज्यादा रह के I am adding maybe zeros to my bank account, which is fine. I am maybe going for the next big after BM and Merck. I'm going for Maserati and then Ferrari and then Lamborghini or whatever. ठीक But है, ultimately, there is an emptiness which sets in. ऑफ कोर्स। Now, मैं वो एम्प्टीनेस महसूस करती हूँ, इसीलिए भारत साल में 2 या 3 बार so आता। now, see, this emptiness you cannot put on a Excel spreadsheet and describe. You नो, can only experience it. तो जो भी मेरे इतने सालों से जो मैंने नॉलेज इकट्ठा किया, जो जी, एक्सपीरियंस, जो एथिक्स, why should I not take it back home to my own town? Because I'm from Ahmedabad. हाँ, It doesn't mean that I'm perfect or God and I don't make mistakes. Of course, it doesn't mean I got 100% success rate. Of course not. Even Harish Salve cannot claim that he has succeeded in all 100% of his Supreme Court cases. Nobody can. But नो, the approach that I have learned and I have strengthened over years and years in the UK, and I must praise the British medical training system. It's one of the best in the world. And then I got some extra training in USA as well, which is also amazing training system. So that I wanted to deploy as a person, as an orthopedic surgeon in Bharat, in India, to benefit individual patients, but also because I was getting frustrated with the NHS. It was राइट, becoming so politically driven. It was डॉगमेटिक, becoming बिकम so डॉगमेटिक। financially driven. या And look who I'm talking with. You know everything about NHS finances with your background. तो जो NHS मैंने शुरू करी थी, कि जहां हेल्थ केयर सिस्टम में थोड़ा पॉलिटिक्स भी हुआ करता था, वो 180 डिग्री चेंज होके ऐसी सिस्टम बना दी गई, irrespective of political party, कि it has become a political system which also happens to provide health care. या And I could not do with that. All my managers knew that I was always up in arms against anything they said. Of course, I had very friendly relations, so I had no personal issues or problems. Nobody asked me to go. Of course, some people would have been very happy that I left, but 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 the farewell I received was so heartwarming. या I was given written statement saying Britain's loss is India's gain. of course, India's gain it is, and Britain have lost a good surgeon. I vouch that as well. And so therefore I came back when I was at the top. Yeah, And when you come back to Bharat, India, when you are on the top, you can give your best to your country, and it's a fulfilling experience. और थोड़ा personal भी था. I didn't want to drive cars anymore. अभी I don't own cars at all. I always use Uber, Ola, and some other vehicles and drivers.
और मेरा जो वर्क है it is completely under my control, Yeah, whereas that was not the case in the UK. yeah, So right now I can choose when I want to do meeting with Sneh, when I want to do a video consultation with my patient in London, yeah. that I can choose. So मुझे ये बताओ कयूर कि between women and men, right? Who happens to be more at risk of this orthopedic problems, or is it same for everyone? कुछ ऐसा है No, it is not. gender It is not. No. Women definitely have more orthopedic problems, खास करके knee problems, shoulder problems, and thumb problems in particular. But why? So, uh, it is combination of genetic predisposition or body structure. क्योंकि women का क्या होता है, because the woman body is designed to bear children. Yeah, So what happens? They have these estrogen and other hormones which relax their ligaments. yeah, तो उसकी वजह से जॉइंट इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने मेल के होते हैं. दे आर मोर रिलैक्स्ड एंड देयरफॉर दे आर मोर एट. समझ लीजिए कि फुटबॉल, इफ गर्ल्स प्ले फुटबॉल, they are at 7 times higher risk of developing anterior cruciate ligament injury compared to a male footballer. Okay. Now, similarly with knee arthritis. So the other thing, one of the women surgeon was saying to me this morning here, and therefore it comes from her, not from me. So before anybody says that I am being misogynistic or whatever, because those phrases are very rampantly used in UK, all this political correctness. Of course, I don't subscribe to that. I love everybody, that's why I don't need to be politically correct. So she told me कि sir, यहाँ थोड़े बड़े होते हैं उनको सर बोलते हैं इंडिया में. तो sir, women are more sensitive, you know that ना. वो सेंसिटिविटी है वो पेन में भी होती है, ताकि हमको जरा भी ऐसी चोट कोई लगा दे तो हमको थोड़ा ज्यादा आवाज निकल जाता है. और जो जेंट्स होते हैं वो ऐसा हाथ दबा के बैठे रहते हैं, उनको भी पेन होता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो ये जो पेन परसेप्शन है, दैट इज ऑल्सो इट्स एन ऑब्जर्वेशन. आई एम नॉट श्योर, बट नीज में इट इज प्रूवन विद द सेम एक्सरेज अ वुमन विल हैव मोर पेन देन अ मैन. Right. So these are but the genetically the predisposition. The secondly, the how they spend their life. घर पे भी काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, so there is more wear and tear. Yeah. फिर women in general don't look after their own nutrition, irrespective of the background. पूरे घर का संभाल लेते हैं और फिर इतना थक जाते हैं कि खुद के लिए एक कप ऑफ मिल्क लेने की भी उनके पास ताकत नहीं रहती है. सो विटामिन डी डेफिशिएंसी ये वगैरह बहुत कॉमन रहता है वीमेन में कंपेयर टू मैन. Osteoporosis, when the estrogen level goes down. So we treat a lot of fractures of the hip, wrist from osteoporosis in women. So these are facts. Yes. Yeah. Good So question. it also makes a difference of your height, because if you're taller, you're gonna ruin your back more. ये नहीं Yes. बोला जाता है कि Yeah. लंबा इंसान जरा जल्दी बैक उनकी जल्दी हर्ट हो जाती है. एक हाइट है, दूसरा जो है वो वेट है. Weight is of course weight is the problem to all the issues. एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जब मैं लोकल लोगों से, मुझे आदत है लोगों से बात करने की, अगर मैं ट्रेन में भी जा रही हूँ Right. मैं बात करूंगी, मैं आई वांट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग. एंड इंडिया में बोला जाता है, जो मैं सुनती हूँ, एंड आई फाइंड इट वेरी अनोइंग, कि डॉक्टर जैसे वो डॉक्टर को मिलते हैं, डॉक्टर ने ना मुझे बेड रेस्ट बोला है, बेड रेस्ट बोला है. हमारे यहाँ पे यूके में कयूर रात को चाहे 9 बजे सर्जरी खत्म होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 बजे नर्स आ जाएगी, वो भी काली नर्स आएगी, तो उठाएगी, उठा के बोलेगी नहाओ, नहाने के बाद तुमको कॉरिडोर में मशीन्स के साथ वॉक कराएगी. हाउ कम देयर इज अ मेजर कल्चरल डिफरेंस कि इंडिया में डॉक्टर्स राइट में बोल देते हैं तुमको चलना नहीं, अच्छा तुमको नी प्रॉब्लम, तुम चलो नहीं, तुम बैठ जाओ. हाउ कम दैट मेजर डिफरेंस है कि लोगों को एक्सक्यूज है. फिर थोड़ा क्या है कि एक कल्चरल और सोशल प्रोग्रामिंग भी इसमें आ जाता है कि आपको अच्छा नहीं है तो एवरीबडी वांट्स टू पैम्पर यू. अरे मम्मी कभी रेस्ट नहीं करती, वैसे 2-3 जो संतान होते हैं वो साथ में आ जाते हैं, आप मम्मी को बोलो कि रेस्ट करे. तो एक पूरा एक माहौल बना हुआ होता है. सी इलनेस इज अ बिग इवेंट इन इंडिया. Oh yeah, सब Hardly- लोग इकट्ठे हो जाएंगे. Hardly any patient even in the OPD comes by himself or herself alone.
वो तो मुझे याद है मेरे ब्रदर इन लॉ, जब उनका ऑपरेशन होता है उनके घर में किसी का, तो मैं जब गई होती तो बोलते चल चल स्नेह तू आ जाना, कैंटीन में जाएंगे, हाँ फोर्टिस की कैंटीन बहुत अच्छी है, वहाँ हाँ हाँ ब्रेड हाँ पकौड़ा हाँ, बहुत अच्छा मिलता है। यस यस. So that I know. So this social programming around illness is very different. और रेस्ट बिकम समटाइम्स क्या होता है कि अगर फीमेल पेशेंट है, आप जी। उसको रेस्ट बोल देते हो तो घर में फिर दूसरा कोई उसके पास एक्सपेक्ट करना बंद कर देता है कुछ दिन के लिए. हम्म. आई लव दो टेडी बेयर्स बाय द वे एट द बैक. सो That व्हाट आई एम that's a gift सेइंग. from somebody to me long time ago. ओह I think माय 20 odd गॉड, years ago. क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश कर दिया. Teddy bear gift. So yes, but what I'm saying is that when a lady is asked to take rest at home in Bharat, in India, क्या होता है कि बाकी के लोग फैमिली के उसके पास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप खड़े होके रोटी बनाइए, आप बेटे या बेटी को, आज तो वो भी स्कूल ड्राइविंग भी हो गया, मम्मी का ड्यूटी में ऐड हो गया तो वो नहीं करवाना है. सो व्हाट हैपेंस इज दे एक्चुअली गेट अ ब्रेक फ्रॉम देयर otherwise very very exhausting daily routine. Right. So it is that, see, health can never be divorced from the social aspect, cultural aspect, and economic aspect. Never. Of course, it can't be. It can't be. So that is why, you know, और वहाँ इंग्लैंड में अलग तरीके से होता है. वो आते हैं, कार्पल टनल की सर्जरी करवाते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी डेटा है इंग्लैंड में कि ऑन एन एवरेज बैक टू वर्क इज 19 days आफ्टर कार्पल टनल सर्जरी, एंड अप टू 6 weeks. तो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ जिनकी हम कार्पल टनल सर्जरी करते थे वो भी रेस्ट ले लेते थे. भी वो रेस्ट टाइम में घर पे क्या करते कौन देखने को जाएगा. बट the thing is here, if I do carpal tunnel surgery on somebody हाँ. and they are working, they'll be back to work in 2-3 days time. बोलेंगे कि ठीक है, एक हाथ ऐसे रखेंगे, दूसरे हाथ से काम करेंगे. हाँ. So these using the system in the name of rest while still making money, that doesn't exist in India except in some government organizations. Yeah. That's truly there. That's truly there. Yeah. Kayur, it has been very informative. I think we'll have to do another session because video lambi nahi karenge. But I still want you to actually tell patients or people what they should do. Should, I mean, active, khana, wana, give that advice Okay. as a Okay. going. Okay. Lifestyle advice. ठीक है. First of all, remain active. Walking is one of the best and the least expensive and safest exercise. Number two, hamstring stretches. Google this and do it every day. Hamstring stretches. Number Right. two. Number three, strengthen your abdominal muscles. Abdominal muscles? Really? Yes, front wale. Number four, stretch your heel muscles, calf muscles. That's number four. Number five, get enough exposure to sunlight in the morning after the sun has risen more than 30 degrees. Next number, because I'm forgetting the numbers now. Okay, that's right. Next number, drink plenty of water. Huh. Next number, stop smoking if you smoke. Easy said than done for those who do. Or vaping is included in that. Next number, I have given up alcohol. I recommend that to everybody. There is no safe limit to alcohol, but hey, don't want to say more. And last but not, well, couple more things. Sleep well at good time and wake up at good times. It's not that you just have 7 hours, but you have from 3 in the morning till 10 in the morning. That's not good. You have your 7 hours from latest 11 p.m. Okay. Scientifically, 10:45 p.m. is the best time to go to bed. Right. And everybody has stress in life, but stress को अपने ऊपर हावी ना होने देने का निर्णय करे. भगवत गीता समझेंगे तो उसमें से उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. Right. It's a manual for psychological and physical health, Bhagavad Gita. Yeah. So even if you don't call yourself Hindu or whatever, it doesn't matter, but follow Bhagavad Gita. Amazing tool to get psychological health sorted. Amazing tool, even to how to live in a society, how to live as a human being. I've noticed कि जितना Yes. इसकी डेप्थ में जाते हो ना, उतना आपको वो एक अच्छा इंसान सोसाइटी के अंदर रहना करना वो सब काफी नॉलेज आती है, अगर आप रियली में समझना चाहते हो. अगर श्लोक ही पढ़ Yeah. के रहना चाहते हो, देन इट्स डिफरेंट स्टोरी. Yes. Yes.
So Kayur, thank you very much. But हमको ये session दोबारा करना पड़ेगा because I want to talk about the different kinds of pains and different Oh, kinds of, yes, you know. yes. So So I'm gonna keep it's on been my feedback. it's been my pleasure. And anybody who wants to seek our advice on video, please contact Sneh. We'll be more than happy to offer Definitely. you video consultation, and you can visit Ahmedabad anytime. Most Thank, welcome. अच्छा thank खाना you. भी मिलेगा. Thank you for watching, Yes, guys. most Okay. welcome. Jai Mata Ji again and namaskar. Okay. Namaskar.